Fine. So, Hariom, Meet and Raj. ठीक है? We'll start today's session. Today's Mhm. session is basically writing task two. Of course, essay writing. I have shared the material on the group already. So, for writing sessions, what I normally like to do is I don't start simple, I don't start easy. Because simple, easy, basic, average, वो सब आप लोगों ने already कर लिया है. That is why you're already scoring 6.5. If you had Mm, not done that, आपके उतने भी नहीं आ रहे होते. आ रहे हैं mm, because you have managed to do that much preparation. उतना English आपको already आता है. What you need now is much higher level, which is why in the beginning whatever I share you might find very difficult, you might find very overwhelming, you might find very advanced level also. But truth be told, that is the level you need to get to. That is your score requirement. So we will not play around. We'll come straight to the point and start doing what needs to be done. So I've shared two Word documents on your group today. So each session, I'm going to try and cover 2 to 3 writing topics. Later on, in fact, 4 writing topics in one session because less time and more work. That's the mm, predicament you guys are in. Predicament का मतलब होता है परिस्थिति, दुविधा. mm. ये Okay. सिचुएशन में आप लोग ये प्रेडिकामेंट में हो, that Mm, time is less and the amount of work that needs to be done is a lot, right? So mm, sessions might extend a little longer, which is fine, but we'll try mm. and cover as much as possible. So let's all open the first Word document that I've shared. The first one. I will also open it alongside you. Just give me a moment. Am I still visible to you on the screen? Yes. Yes. Okay. I will share my screen in just a moment so you can focus here instead of, having to look here and there. I'll just Mhm. share my entire screen. Okay. Can you all see what is being displayed? The essay topic? Yeah. Okay. Yeah. And is it easy to read or do you want the font to be bigger? No, it's okay. It's fine. Yeah, it's Okay. good. How about you, Meet? You're comfortable? Yeah, it's so good. All right. I'll and I'll also tell you all one ground rule that I have followed across all these years. And I follow this like an absolutely non negotiable rule. It has to be followed. I never start writing my essay until and unless I have read the topic thrice. I always read the topic thrice, no matter how simple the topic seems, how mundane, MUNDANE. Mundane का मतलब होता है मामूली, साधारण, ordinary, boring, in fact, even boring. Okay. So, no matter how ordinary, easy, boring, mundane, straightforward the topic seems, I still make it a point to read the topic thrice. So I think I mentioned on day one, our preparation is going to be very thorough. I have promised you boring, so it is definitely going to be boring also. But we will not be going through any shortcuts. We will be going in deep. Okay. So here's the topic, and let's go through it thrice as just mentioned. Some people believe that technological advancements have made life more complex, while others argue that they have simplified it. Okay, I want to read the sentence one more time. Okay, some people believe that technological advancements have made life very complex, difficult, complicated. Okay. But others are arguing that no, the technological advancements have simplified it. Okay, so two opposing views. I'm clear on that. We'll read it again. Some people believe that tech advancements have made life more complex. Others argue they have simplified it. Got it. Absolutely clear.
What do I need to do? I need to discuss both views. I cannot be discussing only one viewpoint. I have to discuss how it has made life complex. I also have to discuss how it has simplified it. I need to be considering both the opinions, and then finally I will give my own opinion, right? So discuss both views and give your opinion. So let's start with the introduction paragraph. Introduction is basically your first impression. It sort of makes it or breaks it for you. This is the very first thing the examiner is going to read. And trust me, intro पढ़ के ही काफी हद तक एग्जामिनर को आपके ओवरऑल स्टैंडर्ड का आइडिया आ जाता है कि ये 6 बैंड का बंदा है, ये 7 बैंड का बंदा है, ये 9 बैंड का बंदा है. So intro is, of course, you cannot mess up any part of your essay, but intro is something that you definitely cannot mess up. ठीक है? So let me read the intro and you all pay attention to what I'm reading. Keep a finger or at least look at what I'm reading. ठीक है? So in the contemporary era, so contemporary का मतलब होता है modern. In the modern era, so look at the spelling for contemporary and era के बाद there's a comma. Keep that in mind. ठीक है? This can be the opening phrase for many of your essays, so you cannot make a spelling mistake in contemporary, and you cannot forget the comma after era. In the contemporary era, the rapid pace of technological innovation has sparked a vigorous debate regarding its overall impact on human life. On the one hand, many contend that modern technology has introduced layers of complexity into daily living. On the other hand, others assert that these advancements have significantly streamlined routine tasks and enhanced convenience. In this essay, comma, I will examine both perspectives before presenting my own viewpoint. ठीक है. क्वेश्चन में जो था उसको हमने पैराफ्रेज किया है, हमने वर्डिंग्स चेंज किए हैं, एंड बी हमने उसको लंबा किया है. We have elongated the question, but basically we have simply rewritten the question. उससे ज्यादा हमने कुछ नहीं किया है. आपको इंट्रो पैराग्राफ में अपना व्यू पॉइंट नहीं देना है, अपना ओपिनियन नहीं देना है, कोई कंटेंट नहीं लिखना है, प्रोस एंड कॉन्स भी नहीं लिखने हैं. You just have to use excellent sentence structure, excellent vocabulary, and paraphrase the question that has already been given to you. ठीक है? So we'll read it one more time. In the contemporary era, the rapid pace, rapid का मतलब होता है fast, आप सबको पता है, right? People go white water rafting, rapids में जाते हैं लोग, right? So rapid basically means very very fast. And pace का मतलब होता है रफ्तार. Pace can be fast also, pace can be slow also. But in the contemporary era, technology का pace कैसा है? Rapid है. Okay? So in the contemporary era, the rapid pace of technological innovation, it has spark करना. It has sparked a vigorous debate. Vigorous का meaning होता है very very enthusiastic, very very energetic, बहुत जुस्सा थी भरे लो, उसको vigorous बोलते हैं. Write down all of these words. Remember every single one of these words. Try to use it in your writing. Try to use it in your speaking. आप वो words को अपने जुबान से बोल के देखो. देखो कि आपके मुंह से कैसे निकलता है. Does it sound natural when you say it? If it doesn't sound natural, practice it 100 times till it becomes natural for you, right? Okay. So, it has sparked a vigorous debate regarding its overall impact on human life. अब हमें पता है कि दो व्यू पॉइंट्स है. तो ऑन द वन हैंड मैनी कंटेंड, ये जो वर्ड है CONTEND, आप लोग को कंटेंडर पता है? कोई भी मैच में कंटेंडर होता है ना, आपके ऑपोजिट जो खेलता है, जो आपको चैलेंज करता है,
कंटेंड करना मतलब कोई चीज को ચેલેન્જ करना. સો ઓન ધ વન હેન્ડ ઘણા લોકો એવો દાવો કરે છે, ઘણા લોકો એવું कंटेंड करे છે, many contend that नहीं नहीं टेक्नोलॉजी ने सब कॉम्प्लेक्स ही किया है. वो लोग यही मानते हैं कि टेक्नोलॉजी से तो चीजें और डिफिकल्ट हो गई है. सो આ લોકો દાવો કરે છે that modern technology has introduced layers of complexity into daily life. But on the other hand, दूसरे तरफ कैसे लोग हैं? Others assert that. असर्ट करना मतलब कोई चीज को भार दे के बोलना. हम सिंपल लिख सकते हैं अदर्स से दैट, अदर्स क्लेम दैट. क्लेम करना मतलब दावो करना अगेन. बट हमने बेटर वर्ड लिखा है, हमने लिखा है अदर्स असर्ट दैट. नहीं, वो लोग भार दे के बोलते हैं, वो लोग असर्ट करते हैं कि नो. Others assert that these advancements have significantly streamlined everyday tasks, routine tasks, and they have enhanced. Improve बोलते हैं ना? Improve is such a simple word. आपको improve के लिए better word use करना है, तो आप क्या use कर सकते हो? Enhance use कर सकते हो. एक और word मैं आपको देती हूं, आप देखो मैं स्क्रीन पे लिख रही हूं. Ameliorate. AMELIORATE. So improve, enhance, ameliorate. AMELIORATE. ये सबका मीनिंग होता है किसी चीज को बेटर करना, सुधारना. ओके, सो we'll go back here. Routine tasks and streamlined convenience. Now, in this essay, I will examine both the perspectives before presenting my own viewpoint. Okay, finally, paragraph 1 is done. You can relax. Now, take a breath before moving on to paragraph 2. इन पैराग्राफ 2 ऑफ कोर्स हम एक साइड डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो पहले हम नेगेटिव साइड डिस्कस कर ले कि नहीं, टेक्नोलॉजी से थिंग्स हैव बिकम मोर डिफिकल्ट, थिंग्स हैव बिकम मोर कॉम्प्लेक्स, ટેકનોલોજી આપણી લાઈફને ઈઝી નથી કર્યું, ઇનફેક્ટ એને વધારે ડિફિકલ્ટ કરી દીધું છે. तो वो वाला व्यू पॉइंट हम पहले डिस्कस कर देते हैं. और यहाँ पे कहीं पे भी आप लोग आई मत लिखना, मी मत लिखना, बिकॉज इसमें से कोई भी व्यू पॉइंट आपका व्यू पॉइंट नहीं है. वी आर डिस्कसिंग two opposite viewpoints of two groups of people. आ हमें नहीं कहता that टेक्नोलॉजी से चीजें ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई है, that नई टेक्नोलॉजी की वजह से चीजें इजी हो गई है. आपका पर्सपेक्टिव तो आप लोग कंक्लूजन में दोगे, अभी आप अपना कंक्लूजन दे ही नहीं रहे हो, आप आर्ग्यूमेंट के दोनों साइड्स को एलैबोरेट कर रहे हो, राइट? सो डोंट मेक द मिस्टेक ऑफ यूजिंग द प्रोनाउंस आई और मी. ओके, so to begin with, it is undeniable that technological progress has, in certain respects, complicated human existence. The constant influx of new devices and applications can be overwhelming, particularly for individuals who struggle to keep up with the ever evolving digital landscape. Moreover, issues such as cybersecurity threats and data privacy concerns have become increasingly pervasive, requiring users to exercise constant vigilance. It is worth noting that the pressure to remain constantly connected can also lead to mental fatigue and reduced personal well-being. Consequently, while technology offers numerous benefits, it simultaneously imposes new challenges that demand adaptation and resilience. Write a paragraph like this in your essay. You will definitely get the band score that you require. Now let's break down this paragraph and understand it without getting overwhelmed. Okay? So हमने पहले शुरुआत कैसे की कि टू बिगिन विथ
આપણે ના નથી પાડી શકતા. અનડિનાયેબલ ફેક્ટ છે. इट इज अनडिनायबल कि हाँ टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस के वजह से इन सर्टन एरियाज ऑफ लाइफ इट हैज कॉम्प्लिकेटेड ह्यूमन एग्जिस्टेंस. ये तो फैक्ट है. इट इज अनडिनायबल. तो ऐसे केसेस में आप लोग अनडिनायबल वर्ड का इस्तेमाल करो. ठीक है. अब हम आते हैं सेकंड सेंटेंस पे. सेकंड सेंटेंस में लिखा है द कांस्टेंट इनफ्लक्स ऑफ न्यू डिवाइसेस एंड एप्लीकेशंस. इनफ्लक्स का एग्जैक्ट मीनिंग है ना वधारो, वधारो, इंक्रीज. द कांस्टेंट इनफ्लक्स, नए नए चीजें आती रहती है ना. न्यू एप्लीकेशंस, न्यू डिवाइसेस. पहले कंप्यूटर था, फिर लैपटॉप था, वी हैव आईपैड्स, वी हैव मोबाइल फोन्स, सो मेनी थिंग्स. इन फोटोग्राफी में भी आप देखो कैमरास अलग अलग टाइप के आते हैं. सो ये जो नॉन स्टॉप कॉन्स्टेंट इनफ्लक्स है, नવું નવું જે આવતું જ રહે છે, that is known as influx. ठीक है. The constant influx of new devices and applications can be overwhelming. Overwhelming मतलब too much, बहुत ज्यादा हो गया. I don't know how to keep up. I'm scared, I'm confused. उसको बोलते हैं ओवरवेल्म हो जाना. ठीक है. ओवरवेल्म होना एक इमोशन है. सपोज मैं 5 साल से किसी से बहुत प्यार करती हूँ. ठीक है. और आज अचानक आउट ऑफ द ब्लू उसने आके मुझे प्रपोज कर दिया, आई लव यू, विल यू मैरी मी. आई माइट गेट ओवरवेल्म्ड बिकॉज ये मैंने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था. सो एक सेकेंड के लिए हिल जाना, दैट्स ऑल्सो ओवरवेल्मिंग. ठीक है. ऑल राइट. सो this constant influx of new devices and applications can be overwhelming, particularly for मतलब खास करीने. okay, it can be too much, it can be difficult, it can be overwhelming. ખાસ કરીને એ લોકો માટે, particularly for individuals who struggle to keep up with the ever evolving digital landscape. इवन आई फील दैट आज चैट जीपीटी सीखा, कल कुछ नया आ गया, फिर वो सीखो, फिर कुछ और नया आ जाता है. द लैंडस्केप ऑफ टेक्नोलॉजी, इज इट कांस्टेंट? डज इट रिमेन अनचेंज्ड? It's ever evolving at a rapid pace, right? And this can be overwhelming, particularly for individuals who struggle to keep up. Okay. Now we talk about an entirely new point, that's about cybersecurity, which all of you are very well aware about. So यहाँ पे ये connector use किया. Moreover, why? Because we are introducing an entirely new point. न्यू पॉइंट इंट्रोड्यूस करना है, देन ऑलवेज यूज अ कनेक्टर. मोर ओवर है, ऑपोजिट पॉइंट है तो हावेवर है. वील स्टडी कनेक्टर्स टुगेदर, डोंट वरी. सो moreover, issues such as cyber security threats and data privacy concerns have become increasingly, what is this word guys? Pervasive. Pervasive मतलब any guesswork? કોમન, એવરીવેર, બધી જ જગ્યાએ મળે છે. સ્પ્રેડ થતું. सो ये साइबर सिक्योरिटी, डेटा प्रिवसी के कंसर्न्स, ये कोई ભાગ્ય જ થાય એવી વસ્તુ નથી. આ બધી જ જગ્યાએ છે. It has become all over the world. It has become very pervasive. So it requires users to remain या to exercise constant vigilance. Vigilance का मतलब होता है क्या करना पड़ता है कि मेरे साथ कोई फ्रॉड ना हो जाए, मेरा प्राइवेसी वो ना हो जाए, डेटा लीक ना हो जाए. यू हैव टू रिमेन कॉन्स्टेंटली अलर्ट, केयरफुल, Yeah. विजिलेंट. चौकन्ना. Okay, so it requires users to exercise constant vigilance. Yeah, it requires people to be vigilant at all times. It is worth noting that ये फ्रेज आप लोग कहीं ना कहीं यूज करना, चाहे कोई भी ऐसे क्यों ना हो, नोंधनीय છે. It is worth noting that, નોંધનીય વસ્તુ છે, that
एंड ये एक नया पॉइंट आ रहा है अब, ठीक है, साइबर सिक्योरिटी वाला पॉइंट खत्म. सो दिस इज ऑल्सो अ सॉर्ट ऑफ कनेक्टर आपने यहाँ पे यूज कर दिया टू इंट्रोड्यूस अ न्यू पॉइंट. It is worth noting that the pressure to remain constantly connected can also lead to mental fatigue. What is fatigue? आज मैं बहुत काम करके आई. I am absolutely fatigued. Tired, maybe. Tired, Exhausted. exhausted, tired, fatigued. Fatigue. In Mehsana, my students would pronounce it as fatigue. Spelling देखो. Fatigue. Right? So it is fatigue, okay? And it is worth noting that the pressure to remain constantly connected can also lead to mental fatigue and reduced personal well-being. It's become very difficult, no? Everybody is posting pictures on Instagram. We compare with other people. Sometimes we also feel a little inferior when we see people traveling so much, when we see people posting their fitness journeys and all. It can have an impact on people who are more vulnerable, more gullible. It's very much possible. ठीक है. फिर यहाँ पे लिखा है consequently. Consequently का मीनिंग क्या होगा? आप लोगों को consequence का मीनिंग तो पता ही है. What is consequence? ये पूरे दिवाली में मैंने बहुत खाया, बहुत नाश्ता खाया, बहुत मीठा खाया. એનું કોન્સિક્વન્સ શું? 5 કિલોસ વધી ગયા. કોન્સિક્વન્સ નતીજો. Result, maybe. રિઝલ્ટ Yeah. नतीजो. राइट. सो कॉन्सिक्वेंटली नतीजामा जो हम लोग लिखते हैं ना बिकॉज ऑफ दिस, उससे अच्छा वर्ड है कॉन्सिक्वेंटली. भले टेक्नोलॉजी, यहां पे देखना क्योंकि मैं डायरेक्ट ट्रांसलेट कर रही हूं, ठीक है. कॉन्सिक्वेंटली भले टेक्नोलॉजी अनगिनत बेनिफिट्स આપે છે. Consequently, while technology offers, although technology offers, यहाँ पे while मतलब although technology offers numerous benefits, जोड़े जोड़े, simultaneously, जोड़े जोड़े, एक साथे, it simultaneously also imposes new challenges. ये simultaneously word लिखो because I want you to use this word, चाहे कोई भी ऐसे टॉपिक हो. आप लोग कंपल्सरी वर्ड्स में अंडरलाइन करना शुरू करो. कॉन्सिक्वेंटली बिकॉज इररिस्पेक्टिव ऑफ क्या टॉपिक है हम यूज कर ही पाएंगे. साइमल्टेनियसली प्लीज याद रखना कि एक साथ है. मैं सब्जी बनाते बनाते साइमल्टेनियसली दाल भी बना रही हूं. બે વસ્તુઓ એક સાથે કરવી, ठीक है, एक પછી એક नहीं, साइमल्टेनियस. सो again over here, consequently, although technology offers numerous benefits, it simultaneously imposes new challenges that demand adaptation and resilience. All good? Yeah. नाउ आई नीड यू टू सिंसियरली डू वन थिंग. मैंने जितना भी अभी तक रीड किया है ना, आप एकदम आराम से रिलैक्स होके मन में पूरा पढ़ जाओ बिफोर वी गो अहेड. ऑलवेज हल्कू बबड़ी ने वांचो, उससे प्रोनाउंसिएशन भी इंप्रूव होता है. तीस्ता
When you are done, give me a thumbs up, okay? Can we move ahead? Okay. So now we will move on to paragraph 3, right? So the third paragraph is going to have the opposite viewpoint. ऑपोजिट व्यू पॉइंट में क्या होगा कि टेक्नोलॉजी से हमारी लाइफ इजी हुई है, कॉम्प्लेक्स नहीं हुई है, इट इज बिकम इजियर. सो उसके वो आर्ग्यूमेंट के सपोर्ट में हम अपने पॉइंट्स लिखेंगे, ठीक है? सो ऑपोजिट पॉइंट लिख रहे हैं ना, तो आप कन्वर्सली लिख सकते हो. देखो, कन्वर्सली, कन्वर्सली का मतलब ही है ऑन द अदर हैंड, बीजी बाजू જોઈએ तो. ठीक है? सो ऑन द अदर हैंड. ठीक है, बिफोर बिफोर कंटिन्यूइंग, लेट्स डू वन स्मॉल थिंग. हरिओम. चलो, गुड मॉर्निंग. लेट्स गेट अप, टेक अ राउंड, हैव अ ग्लास ऑफ वाटर. आई एम नॉट ब्लेमिंग यू, आई एम नॉट स्कोल्डिंग यू. आईएलटीएस में नींद आएगी आएगी, बट गेट सम चिल्ड वाटर, गेट अप, हैव अ नाइस ग्लास ऑफ वाटर, लेट ब्लड फ्लो अ लिटिल बिट. बिकॉज एक एक चीज मैं चाहती हूँ उतरे, अच्छे से अंदर उतरे, राइट? स्ट्रेच अ लिटिल बिट, उठ जाओ, चलो एक बार के लिए उठ जाओ. मीत, ऑफ कोर्स यू आर आल्सो फ्री टू डू दैट. ऑलवेज हैव अ लिटिल वाटर, स्प्लैश वाटर ऑन योर फेस. हम 2 घंटा इसलिए लेके बैठे, जाओ पानी पी के आओ. आई विल डू द सेम थिंग.
Look, Meet, Hari Om, I got someone to make you feel a little fresh. Hey, to say hi. She is the dog with the best English in the world. I have other dogs also, but यही हाथ में आई. You had water? You're on mute. How many dogs you have? Okay, so my family has 4 dogs. One stays with my sister and 3 live with me. So this is a miniature pinscher. Her name is Tista, but यहाँ पे Tista बोलते हैं तो everybody hears Pista. Pista Pista. banana. So we call her Titu. Titu short में we call her Titu. दूसरी है शित्जू है मेरे टेबल के नीचे बैठी है वो ताशी है. And then I have a senior dog called Duffy. He is 12-13 years old. यहाँ पे Oh, 3 dogs. She is around my laptop only when आपको उसके भौंकने की आवाज आती होगी कभी कभी during the session. कभी हाँ. Yes. ठीक है, both of you are feeling fresh. Yeah. ठीक है, ये तो पहला ऐसे चल रहा है आज के दिन का. हम सड़ेंगे साथ में ही सड़ेंगे, so don't worry about that. ठीक है, चलो. So let's move on to the third paragraph. ये रहा. We were starting with conversely. बीजी बाजू जोवा चाहिए तो conversely there is a compelling argument. Compelling का मतलब होता है एकदम तगड़ा आर्ग्यूमेंट है. ऐसा नहीं कि ढीला ढाला आर्ग्यूमेंट है. आपको सही में सोचने पे मजबूर कर दे ऐसा, कुछ करने पे मजबूर कर दे ऐसा. कंपेलिंग इज वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी तगड़ा. ठीक है, सो कॉन्वर्सली there is a compelling argument. બીજી બાજુ આ point પણ solid છે. There is a compelling argument that technology has greatly simplified life in numerous ways. हमारे लाइफ को सिंप्लीफाई भी किया ही है in many ways. अब हमने स्टार्ट किया एग्जाम्पल्स देना, कैसे सिंप्लीफाई किया है. तो ये रहा अपना पहला पॉइंट. Tasks that once required significant time and effort can now be completed with remarkable efficiency. So there were tasks, even simple things like email writing. It might have taken some people a very long time to draft a good email. But now what happens because of Chat GPT, because of, you have AI, you have things that can spell check, grammar check ho jata hai. So tasks that once required significant time and effort can now be completed with remarkable efficiency. Efficiency basically means कोई चीज को कम टाइम में करना and correctly करना, अच्छे से करना and कम टाइम में, right? So remarkable efficiency. For instance, for example, एक और चीज मैं यहां लिखती हूं. We can say, for instance, we can say, for example, we can also say to exemplify. देखो on your screen. For instance, for example, to exemplify. So, to exemplify online banking, I'll just remove this. For instance, online banking, e-commerce, and instant communication tools have revolutionized. कोई चीज को रेवोल्यूशनाइज करना मतलब कोई चीज में बहुत बदलाव लाना, कोई चीज में एकदम क्रांति लेके आना. सो यहाँ पे रेवोल्यूशनाइज करने का सिंपल मीनिंग होता है कोई वस्तु ने एकदमच बदली नाखवू, टू कंप्लीटली चेंज समथिंग एंटायरली, एकदम अलग कर दिया, एकदम डिफरेंट कर दिया. पहले हम कैसे कपड़े धोते थे, नाउ वी हैव वॉशिंग मशीन्स टू डू द सेम. सो रेवोल्यूशनरी चीज है वो, राइट? So, instant communication tools have completely changed, revolutionized how people manage their daily responsibilities. We no longer walk to the bank. We no longer go to the ATM. We no longer have to go somewhere to transfer money or to get money.
how we are dealing with these things, banking, e-commerce, even shopping, even ordering food, all sorts of things. It has revolutionized how people manage their daily responsibilities. फ्रॉम अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, मतलब हम बड़े नजरिए से देखें तो, ठीक है, पर्सपेक्टिव का मतलब होता है नजरिया. सो फ्रॉम अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, technological advancements have also improved access to education and healthcare, thereby contributing to societal development. देखो, दिस सेंटेंस इज इंपॉर्टेंट, मैं हाईलाइट करती हूं पूरा का पूरा पहले. फ्रॉम अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स ने क्या किया है? दे हैव इंप्रूव्ड एक्सेस टू एजुकेशन एंड हेल्थ केयर. सिंपल. thereby contributing to societal development. ये जो है ना, आप कोई भी ऐसे में यूज कर सकते हो. આ વસ્તુ થઈ છે જેના કારણે સોસાયટીમાં ડેવલપમેન્ટ થયું છે. ये कोई भी चीज हो सकती है, राइट? कि आजकल फॉरेन जाना ज्यादा इजी हो गया है, देयर बाय कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू सोसाइटल डेवलपमेंट, सोसाइटी નું डेवलपमेंट. इतना पार्ट लिख लो. thereby का मीनिंग आप समझो, એટલે thus, 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 thereby contributing to societal development. अब हमको नेक्स्ट पॉइंट इंट्रोड्यूस करना है. ऊपर हमने यूज किया था मोरोवर कॉमा, अब हम यूज कर रहे हैं फर्दर मोर कॉमा. ठीक है, फर्दर मोर कॉमा, इसका मतलब होता है एंड. नेक्स्ट पॉइंट, इट्स अ कनेक्टर. Furthermore, automation and artificial intelligence have reduced the burden of repetitive tasks, allowing individuals to focus on more meaningful and creative pursuits. This clearly illustrates that technology can serve as a powerful tool for enhancing, improving, ऊपर लिखा था ना, ameliorating. Technology can serve as a powerful tool for enhancing productivity and quality of life. Okay, clear? So can we replace the word with emal? I forgot what you said before. Instead of Ameliorate. enhance. Yeah, Ameliorate. ameliorating. Yes, Yeah. you can. एग्जैक्ट सेम मीनिंग है, आप यूज कर सकते हो. जहां पे भी आप इम्प्रूविंग डाल सकते हो ना, जहां जहां पे भी आपका दिमाग कहता है कि અહીંયા इम्प्रूविंग લખાય, ત્યાં ત્યાં एमिलियोरेटिंग લખાય. ओके, सो दोनों साइड्स हमने डिस्कस कर लिए. अब क्या बाकी रहा? अपना ओपिनियन, योर ओन पर्सपेक्टिव. सो पहले कंक्लूजन पैराग्राफ नहीं आएगा. यू मेक 5 पैराग्राफ्स, not 4 paragraphs. Till now, I know you've been taught intro, body 1, body 2, conclusion. But here there's an additional paragraph, especially in this type of essay, okay? Where there are 2 viewpoints and aapko bola hai discuss both views and then give your opinion. There you will have one additional paragraph, and this paragraph is dedicated to your opinion, which is why आप देखो यहाँ पे तुरंत कौन सा pronoun आया? My. My. I My. believe that, in my opinion. Here's where you start using the personal pronoun. Okay? So, in my opinion, yeah, ask me. Just um so like can we not do that in the conclusion paragraph itself? Uh, Not advisable. You can do okay. that and get a 7 band, and alternatively, you can do this and get an 8, 8.5. That's the difference. Okay. Okay. Okay? Understood. Because until now I was following that structure, so just curious. Yeah. You know, it's you're always able, if you have a special paragraph dedicated to explaining your opinion, you'll be Hmm. able to explain it with much more clarity. It will not become Mm. lost somewhere in the conclusion, right? Mm-hmm. So, Yes. in my Okay. opinion, despite the undeniable complexities introduced by technology, its advantages far outweigh
its drawbacks. So आपका मानना ये है कि हाँ टेक्नोलॉजी ना લીધે भले अनगिनत कॉम्प्लेक्सिटीज आता होए, कितने सारे चैलेंजेस आते होंगे, बट ये आपका मेन पॉइंट है, इट्स एडवांटेजेस फार आउटवे इट्स ड्रॉबैक्स. उसके जो बेनिफिट्स है वो ड्रॉबैक से कई ज्यादा है. फार आउटवे को कैसे यूज करना है? जो ज्यादा है वो पहले लिखोगे, ठीक है? એડવાન્ટેजेस આઉટવે ધ ડ્રોબેક્સ, એટલે એડવાન્ટેજ ડ્રોબેક કરતા વધારે છે. સો ઇટ્સ એડવાન્ટેजेस ફાર આઉટવે ઇટ્સ ડ્રોબેક્સ. Indeed, the key lies in how individuals choose to engage with these innovations. You can use these innovations for good things also. You can use them for bad things also, right? So basically, what our opinion here is that the advantages are far greater than whatever disadvantages, whatever drawbacks are there. But ultimately, it depends on a person how they choose to employ technology, how they choose to engage with technology. बाय डेवलपिंग, ये एक बहुत अच्छा वर्ड है, प्लीज लिख के रखना, डिजिटल लिटरेसी. लिटरेसी मतलब पढ़े लिखे लोगों को लिटरेट बोलते हैं ना, एडुकेटेड. By developing digital literacy and adopting a balanced approach, people can harness. Harness करना मतलब पकड़ के उसका प्रॉपर इस्तेमाल करना. विंड एनर्जी के लिए हम विंड को हार्नेस करते हैं. वाटर एनर्जी के लिए हम पानी को चैनलाइज करते हैं. चैनलाइज, हार्नेस, राइट? ओके. By developing digital literacy and adopting a balanced approach, people can harness the benefits of technology while minimizing its negative effects. उसके negative effects को आप completely remove नहीं कर पाओगे, but you can at least, what can you do? You can reduce, minimize its negative effects. It is evident that, evident का मतलब होता है एकदम clear, स्पष्ट. It is evident that when used carefully, judiciously, it is clear that, it is evident that, આ વસ્તુ સ્પષ્ટ છે, that when used carefully, when used judiciously, टेक्नोलॉजी के पास ये पोटेंशियल है. टेक्नोलॉजी has the potential to revolutionize human life in profoundly positive ways. In conclusion, although technological advancements have introduced certain complexities, they have predominantly simplified and improved. के लिए एक और वर्ड आ गया, enriched human life. Ultimately, it is the responsibility of individuals to navigate this digital landscape wisely, समझदारी से, judiciously, wisely, समझदारी थी, and make the most of the opportunities it presents. Okay? नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सेशन, ये पूरे ऐसे को आप लोग बारी बारी रीड अलाउड करोगे. ये पॉइंट पे मैं रिकॉर्डिंग बंद कर देती हूँ, अदरवाइज रिकॉर्डिंग बहुत लंबा भी हो जाएगा, एंड मुझे ग्रुप के साथ इतना ही शेयर करना है. बिकॉज नाउ दिस नेक्स्ट पार्ट व्हाट विल हैपन इज दैट यू विल डू व्हाट यू नीड टू डू. ठीक है? आई विल मेक यू रीड आउट लाउड, आई विल मेक यू प्रैक्टिस. सो दिस सेक्शन विल बी your participation. So I'll stop sharing the screen first. You all have the essays. I'll stop the recording also now.